demand that. The third objective is really to share with our younger generation and also our non-Sikh and other communities here in the UK that Sikhs' plight in India and our call for freedom and what it is based on. These three objectives is what we are set out to do. And in terms of an achievement, when I look across the crowd, I see so many young faces, many of those who probably weren't even born in 1984. So if you think about what message we've managed to keep that light alive through awareness, through education, and teaching our young what we've been through and what we need to continue the struggle until we get that truth, justice and freedom. Then cover on to justice and we'll talk about freedom. So now I'm going to introduce the next speaker, Bhai Kartar Singh from Leicester. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sat Sri Akal. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sad Sangat Ji, there is a fable that when the sun was setting for the first time, when light was decreasing and the signs of darkness were setting in, darkness set its foot on the earth. But it is said, far away in a small hut, one little lamp lifted its head up and said, I challenge the darkness. If nothing else, then at least around myself, I will not let it settle. Around myself, I will establish light. These are the words of Jaswant Singh Khalra, who was the light, who stood for the truth. These are also for Sant Jarnail Singh Ji Khalsa, who was the light, who was the truth, who by General Shabeg Singh, who was that light and that truth, by Amrik Singh, by Tara Singh, by Menga Singh Babbar, and all of our Shaheed Singhs and Singhariyan, they are that light. And we today carry that torch of light, of truth forward. We shine for truth, justice, and freedom. 1984 was not the beginning, it was the culmination of an attack against the Sikh nation, an attack that began many years before. Since partition, the Sikhs have been the target of separatist, sectarian politics. The Indian government has tried to suppress our fearless and truth-centered community and nation. They have attacked our language. They have diverted our natural resources. They have legislated the destruction of the Punjab. The world has been hidden from this truth, but we stand here speaking this truth today. Indira Gandhi, a convicted criminal who abused the powers of emergency in 1975, who ruled as a dictator like Hitler in 1933, she wanted absolute power. This is the truth that has been hidden. The Sikhs saved democracy in India. We, through our civil rights campaigns, through our peaceful movements, we challenged this tyranny, this dictatorship. And when all other communities had fallen silent, we were the only ones that stood up for the truth. It was the Punjab, the Sikhs, that stood up for the truth. It is we who brought down the dictatorship of Indira Gandhi. This fearless challenge of tyranny is why the Indian government sought the Sikh community out for genocide. This is why we were targeted, because we did not stand for the injustice. We did not stand up for the dictatorship and the persecution. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The truth is, what took place in 1984 was a genocide. That's one of the key messages we are sending here, not only to the UK government, but the worldwide community. In 1948, the United Nations defined the word genocide. What happened to the Sikhs? In June 1984,
what happened afterwards in Operation Woodrose, and what happened in November 1984 was genocide, a pre-planned attack on the Sikh nation, on the Sikh people, on Sikhi itself. We must not let the world forget what happened 30 years ago. The truth is, earlier this year, we learned the UK government, don't know in what frame of mind they were, that they decided to give advice and assistance to attack the holiest of holies, Sri Harmandir Sahib. What was in Margaret Thatcher's mind 30 years ago? We have a right as British Sikhs to know the truth. If an SAS officer goes to Punjab in February 1984 and advises about how Darbar Sahib should be desecrated, I am sure that that same SAS officer also knew about Operation Woodrose, how Punjab would be sealed from the rest of the world, how the media would be excluded, and how young Sikh men would be taken village by village. 100,000 young Sikh men disappeared in the first 4 to 6 weeks following Operation Blue Star. The truth about that must come out. What happened to those Sikhs? Why was the media excluded? And the UK government had a direct hand in that as well. The truth does not stop there. Often we talk about Aityasak Gurdwara that were also desecrated. 38, 42, we heard various numbers. There's a number in that leaflet that Jaswinder Singh mentioned. It mentions over 125 Gurdwaras. That was quoted by the Canadian government in 1985. The fact that the army was going village by village looking for young Sikh men. Where do you go? You go to the Gurdwara. You desecrate that Gurdwara. Even that number of 125 is too small. This was not just an attack on Sri Harmandir Sahib. It was an attack on the Guru Granth Sahib. It was an attack on Sikhi throughout the Sikh homeland of Punjab. The truth about the genocide in June 1984 and Woodrose is it happened behind closed doors. But the genocide that took place in November 1984 was in front of the world's eyes. World leaders landed in Delhi for Indira Gandhi's funeral. They saw those scenes. They smelt the bodies of burning Sikhs. And what did they do? They remained silent. But in November 1984, what was the UK government discussing? The Cabinet Office papers from November 1984 show the Indian government was threatening the UK government about a multi-billion-pound defence contract if they supported or showed sympathy to the Sikhs while the Sikhs were being burnt alive in Delhi and cities throughout India. That is the truth about how India has influenced the UK government, the German government and the Canadian government, because those papers have also come out that in December 1984, India was threatening sanctions against Canada, Germany and the UK if they supported the Sikhs. We now need to think about the future. We are here 30 years later. We're talking about the events of 1984 being genocide. But let me tell you about the truth of what's happened in the last few months. The British government carried out an internal review. It was a very quick review. It reported within 3 weeks on the 4th of February.
When we wrote to the Prime Minister before the report came out, questioning the review, the scope of the review, it took the government 8 weeks to respond to our letters. 3 weeks to look at those 20,000 files and those 2,000 records. But why did it take 8 weeks to respond to our questions? In April, we then wrote to the Foreign Office Minister and said there are victims in this country, British Sikhs, who travelled to Punjab after February 1984. Some of them saw very difficult times. They could not leave Punjab. Some of those individuals have started to come forward. Others were actually at the Darbar Sahib during Operation Blue Star, and some lost their lives. So we asked a very simple question of this government. Will you meet the victims, the British victims of 1984? We are still waiting. The victims are still waiting for this government to meet them, to talk about why the truth is so important. And I'm going to cut things short by saying the next step is we will be asking you. We've already been talking to the BBC, the ITV, and various journalists. Should we take legal action against the UK government? They failed the Sikhs in 1984. They failed us in February. They failed us in November. And they're failing us today. Politicians in this country understand one thing, which is votes. They have an opportunity to put those wrongs right before May next year. The Labour Party are more or less on record to say if the present government does not give us our independent public inquiry, they will do so if they come to power. We must hold them to that. Don't trust any politician. We must get the truth from whoever comes to power. Later on, and he may have already arrived, Simon Hughes, the Justice Minister, will be addressing you. I think we should be asking Simon to tell us what he knows about the truth. And finally, we're going to talk about justice and we're going to talk about freedom. The truth is, we have not had justice for the last 30 years. The truth, the sad truth is, we're unlikely to get justice now. Therefore, the ultimate truth is, in the words of Sant Jarnail Singh Khalsa Ji Bhindranwale, that the truth is that we must have our own separate Sikh homeland. We owe it to the Shaheeds of 1984. How can we step back from their shahadat? How can we give up on the ultimate dream that we must be free in our own sovereign homeland? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ जिस ढंग नाल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिस ढंग नाल स्पीकर ऑर्गेनाइज किए हैं, जो दास की ड्यूटी लगी है, अज आपां इत्थों कुछ प्राप्त करके जाना है। क्योंकि जिस ढंग नाल कौम ने हुण अपनी इस गतिविधि नूं नवां रूप दिता है, उहदे विचों आपां इस साल मारां दी जो राय लई है उहदे मुताबिक यह है कि आपां इन्हां इकट्ठां विचों कई वारी अपनी गल करके चले जाईदा है, कढ़ी दा कुछ नहीं। तो जो कुछ दास ने बोलना है भाई, वो तुसां सारियां ने बड़े ध्यान नाल, तुहातों दास ने कुछ अप्रूवल, कोई मैंडेट, कोई मंजूरियां लैणियां हन, जिन्हां दे बिहाफ ते, जिन्हां दे सिर दे उत्ते एक पूरा साल आपां इन्हां लोकां नूं दसना कि समुची कौम जो है वो इस कारज दे नाल संबंधित है। सो मेरी बेनती है, जो कुछ मैं बोलना है, जो कुछ मैं आपके चरणों में रखना है,
ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪੜਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਐਨ ਦਾ ਜੋ ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਚਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1982 ਤੋਂ ਤਾਂ SS ਤੇ KGB ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 11,000 ਜੋ ਫਿਗਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 8,000 ਜੋੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹ 8,000 ਜੋੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦਾ। ਔਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਊਨਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਟਰੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਜਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਦੋ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
लगातार असां ने एक नहीं अनेकां चिट्ठियां पा के बेनती की है कि कैमरे ने कहा सी मैं सिखां नाल डायलॉग करेंगा तो अस नूं पुछिआ वो डायलॉग कित्थे गई है। बहुत मेहनत तो बाद फॉरन ऑफिस की एक सीनियर मिनिस्टर ने साडे नाल मीटिंग की जिहदे विच समुची सिख कौम के नुमाइंदे गए सन, लेकिन उस मीटिंग तो बाद भी अज तक उन्हां दे जवाब नहीं आए। असीं उन्हां दे जवाब की उड़ीक कर रहे हैं अज तक कि तुसीं सिखां नाल ते 84 दे वो विक्टम जिन्हां नूं असीं चाहुंदे नहीं सी असीं मजबूर हो के रिलीज़ की है लिस्ट मीडिया नूं कि आ विक्टम हन जिन्हां विच भाई बलबीर सिंह जी जो ग्रंथी की सेवा अज भी कर रहे हैं जो दरबार साहब के विच सन। इन्होंने सानू कहा सी कि जिहड़े दरबार साहब के विच कुछ हाजिर लोग सन सानू वो दसो, असीं वो भी इन्होंने दस दिता साडे कोल बहुत है, बहुते साडे वीर आउणे नहीं चाहुंदे, लेकिन गुरु प्यारे खालसा जी सरकार अज तक भी बहन लई तैयार नहीं। और असीं सरकार नूं अज इस समुचे इकट्ठ विच भरे इकट्ठ विच बेनती करदे हां कि जेकर सरकार साडे नाल ना बैठी तो सिख पे मजबूर होणगे होर जो बाकी शहीद जो परिवार हैं उन्होंने लिस्टां मीडिया तक जिहड़ियां आ गई वो जारी कीतियां जाणगियां। सो मैं बेनती करांगा कि मैं जकारा छड्डना असीं सरकार नूं बेनती करदे हां कि सिखां नाल बैठण, उन्हां परिवारां नाल बैठण, उन्हां परिवारां दी गलबात सुणन, क्योंकि वो परिवार हैं जिन्हां नूं दस्सिया नहीं गया। ये सरकार की ड्यूटी बनती सी एक ब्रिटिश सिटीजन होने के नाते कि तुसीं पंजाब विच ना जाओ, उत्थे करफ्यू लग सकता है, उत्थे पंजाब बंद जाना। 7 दिनों बाद लोग दिल्ली तो पिंडां विच दी होके पंजाब गए आ, उहदा जिम्मेवार कौन है? ये लोग जिम्मेवार हैं जिहड़े परिवार उत्थे महीनियां बदी घर गए जिन्हां नूं कोई चार्टर प्लेन का बंदोबस्त करके नहीं कढ़िया गया, उहदे लई जिम्मेवार ये लोग ये सरकार है। सो मैं जकारा छड्डना है असीं सरकार नूं बेनती करते हैं कि बहुत छेती तो छेती सिखां नाल बैठण, उन्हां परिवारां नाल बैठण जिहड़े परिवार अफेक्टेड होए आ उन्हां दी गल सुणन ताकि उन्हां नूं इंसाफ मिल सके। सो मैं जकारा छड्ड के प्रवानगी लैनी है कि सरकार साडे नाल बैठे और साडी गल सुणे। बोलो सो निहाल श्री साध संगत जी जिन्हें परिवारां ने इफेक्ट होए आ, मैं थोड़े तो इस गल की भी प्रवानगी लैनी है कि जे सरकार इन्हां सारियां गल्लां तो कन्नी करती है तो असीं बहुत जिहड़े मार वकील हैं उन्होंने कहा है कि थोड़े लीगल केस बनते हैं, आपां लीगल केसां दीयां तैयारियां करनियां हैं और लीगल केस सरकार ते करना है कि सरकार ने एक अपने सिटीजन की पूरी जो है वो संभाल ही की, इन्हां दा फर्ज बनता सी। सो जे लीगल केस की जे गल आवे तो आप प्रवानगी दो कि आप लीगल पासे भी चलना है। 25 वकील जो हैं उन्होंने सलाह मशवरा करके मैं उन्होंने धन्यवाद करदा, जिहड़े नामवर वकील हैं उन्होंने सानू कहा है कि बहुत तगड़े लीगल केस बनते हैं, तुसीं प्रवानगी लो कौम दे विचों कि जे सरकार अज आपां नूं इग्नोर करती है तो आपां जो लीगल रूट है जो कानूनी कार्रवाई है आपां वो भी करनी है। सो उस गल की भी दस प्रवानगी चाहेगा। बोले सो निहाल गुरु प्यारे खालसा जी। जो पंजवां अपना मुद्दा है, जो पंजवां अपना रेजोल्यूशन है वो है कि 30 साल लगातार अपने सगल किया है। 30 साल कौम ने कोई सड़क गली नहीं छड्डी जिथे आपां इंसाफ लई जो पुकार नहीं की। अज आपां ने उस 1986 के उस रेजोल्यूशन में दोहराना है, ए समुचे इकट्ठ विच दोहराना है, उन्हां लोकां नूं पछाड़ना है कि जिहड़े कहंदे नहीं ये कौम की आवाज़ नहीं, अज उस आवाज़ नूं वारा दिओ कि 30 सालों तो बाद 30 सालों का समा जो हो गया असी कर्जा उन्हां शहीदों का चुकाना है। उन्हां दी अज आवाज़ नूं असी ये गल पहुँचाउणी है कि असी वचनबद्ध हाँ, असी वो तुहाडा सुपना जो है जदों तक वो खालिस्तान इंडिपेंडेंट सिख स्टेट जो है वो होंद विच नहीं आ जाती, समुची कौम का बच्चा बच्चा अपने शरीर का अखीरी कतरा बहा देगा, लेकिन उस गल तो पिछे नहीं मुड़ेगा। उस गल प्रवानगी दिओ हथ खड़े करके डट के कि सिखां ने उदों तक पिछे नहीं हटना जदों कोई शहीदां दा वो सुपना साकार नहीं हो जाता और इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की जो होंद है वो बरकरार नहीं हो जाती। आओ
इस जकारे में बढ़ चढ़ के योगदान पाना है। बोले सोनिया श्री गुरु प्यारे खालसा जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। दासां कोल शब्द नहीं। मैं तो कई बार ये सोचदा कि असीं कई जन्म ही जम के आपदे चरणों में अपना सीस वड्ड वड्ड के पेट कर दिए। थोड़ा असीं कर्जा नहीं मोड़ सकते जिन्हें कौम ने जिथे सदा दिता है, इन्ना योगदान पाया है। एक एक रोम रोम ऋणी है थोड़े चरणों के विच, और कौम की इस आवाज़ को बुलंद रखना है। और असीं वचनबद्ध हां थोड़े नाल कि असीं तुहानूं पैठनी धोखा नहीं देवांगे, जिन्हें सवाल सन तुरदे रहांगे। सो इन्ने शब्दों नाल दास प्रबंधकों का मैं खास करके मैं तिन्ना चैनलों का मेरी ड्यूटी बनती है एज ए सेवादार पे तिन्ना चैनलों ने इस साल जिस ढंग नाल सेवा निभाई है, बधाई के पात्र हैं। कोई शब्द नहीं, अपने तौर पर अपना प्रोग्राम मैं यही कहना ना भाई इनू समझो थोड़ा जो तुम अपने किसी प्रमोट प्रोग्राम करते हैं इदा करो। तो इस साल उन्होंने इदा ही कोलों प्रोग्राम बना के जिस ढंग नाल तिन्ना चैनलों ने, सारे मीडिया ने, बाकी रेडियो स्टेशन, परचे सारिया ने कर बच्चों ने सोशल मीडिया के बच्च जो तुसाने योगदान पाया है वो कोई मिसाल नहीं। तो लेकिन अज तुसी देख सकते हो वह नज़ारा जो है चप्पा चप्पा भर दिता नन्नन का तुसा ने। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद है संगतां दा, और नाल ही गुरु घरां दा, संस्थावां दा ऋणी हाँ असीं गुरु घरां दे जिन्हां ने कोचां लई अपनियां चैक बुकां खोल दित्तियां कि जिन्नियां मर्जी कोचां ले आओ, चैक लेके देते। ये थोड़ी माया व्यर्थी नहीं जाऊगी, ये कौम दे लकी लगी है। और सतगुरु थानू होर चढ़दियां कला बख्शे। हार्दिक धन्यवाद है। सातों प्रोग्राम में हो सकता उत्थे भी मैं माफी मंगी सी कि बहुत वीर साडे रह जाते हैं, उन्हां तो खिमा मंग लईदी है। जरूर समा होवेगा, आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इन्हें शब्दों नाल दास सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुकां दी खिमा करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Justice, how the Indian justice system works. If you are rich or have influence, it works very well in your favor. You can rob, murder and rape without fear of punishment. If, however, you happen to belong to one of India's minorities or the poor, your chances of getting a free trial or a fair trial and receiving justice are near to impossible. SOPW deals with the cases of political prisoners, and we find that the law and order process in Punjab starts when one day a senior policeman decides he needs a promotion. That policeman spins a story about a local group of activists. Vaheguru, 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 bolo Vaheguru, 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 Vaheguru। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सासंग जी बेनती है कि मैं अंग्रेजी विच गल करांगा ते मेरी माफ़ी हैगी शुरू विच ही। I want to speak in English because we're here in London. If you wanted to speak in Punjabi, we do it in our Gurdwara, innit? We're here, we're talking to the people of the world in a way. I want to apologize from the Khalsa of this world. An apology to the Sikh nation from the Khalsa. Right now, what you're seeing is a very unorganized army. Guru Gobind Singh Ji Maharaj says, Khalsa Akal Purkh ki
फौज। सारे आखो खालसा अकाल पुरख की। We're supposed to be an army of God. Now when the youth of today look around at this army, they're not very inspired. They don't see the leadership that they would have seen from Banda Singh Bahadur, from the Khalsa of old. They would have stood up for that Khalsa of the old and given their life just upon a bachin from that Khalsa. But nowadays the youth don't feel that inspired. And the fault lies with the Khalsa. Sasangaji, they've asked me to speak about justice. I'll tell you one simple truth. There is going to be no justice that the Indian government can give us that will look like justice. एक गल मेरी मान लो, पूरा न्याय करे करतार. Nothing they can do for us will bring back those people that they killed like that in June, in November. So if we're not seeking them to give us justice, what we need to do is for our Guru to give us justice. Pura nyaya kare kartar, our Guru. And our Guru looks at us today and he says, where is the Khalsa? The Guru is asking that question, where is the Khalsa army? Where is it? आजकल दे नौजवान नहीं देख सकते खालसा किथे है कि खालसा लड़दा पिया है, खालसा फुट विच पिया हुआ है. The Khalsa army is not standing up, Khalsa ji. I'm speaking the truth here because they told me to come and speak about something. I don't want to come in front of you and tell you some lies, get you through some jakari. The fact is, this Panth is not very well organized. And the biggest reason is because we are not led by the Khalsa. We stop to understand that the Khalsa is our Guru. The Khalsa is the Guru. Guru Granth Sahib Ji is the Jot of the Khalsa. And the Khalsa is the body of the Guru. Guru Roop Khalsa Ji, जिथे जिथे भी मेरी आवाज सुनती है, सारी गुरु दी संगत गज वज के बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. मेरे तो पहला नौजवान वीर जो बेइंसाफी हिंदुस्तान दे विच सिखां दे नाल ते बाकी घट गिनतियां नाल हो रही है, खास करके जो कुछ पंजाब में हो रहा दस के गया, तो मेरी ड्यूटी मेरी जिम्मेवारी FSO वालों जिथे तुहाडा धन्नवाद करन दी लगी है, उत्थे सब तो अहम मुद्दा, सब तो संवेदनशील मुद्दा सिखां नूं राज भाग दी लोड़ क्यों है, सिखां नूं खालिस्तान कदों प्राप्त होवेगा, सिखां नूं खालिस्तान किवें प्राप्त होवेगा. ये सवाल है जेड़ा जवाब मंगदा, जेड़ा जवाब अज असी सारिਆਂ ने बच्चे बच्चे ने जवान ने बुजुर्ग ने घरां नूं लेके जाना. एक बार फिर रिपीट करा, सिखां नूं राज भाग खालिस्तान क्यों चाहिदा ते जेड़ा मौजूदा सिस्टम राज भाग सानूं मंजूर क्यों नहीं, ये किवें मिलेगा ते कदों मिलेगा. ये सवाल आ जेदा जवाब आपां मंगदे आ. सब तो पहला तुहाडे सामने अखां दे एक बहुत वड्डी मिसाल आ. दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान, जिहदे विच 90 साल पहला संघ परिवार ने कहा सी कि असी इस धरती ते राज करना. आपां कहने आ सिखां ने हिंदुस्तान की आज़ादी विच 90% कुर्बानियां दित्तियां. आपां कहंदे आ असी पंजाब की मुबारक धरती ते 150 साल राज किया. 1710 मिसलों का राज, बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज, ते 1799 तो 1849 तक महाराजा रणजीत सिंह का विशाल राज, जिहदियां सरहदां तिब्बत तो ला के चीन तो ला के अफगानिस्तान तक फैलिया हुई सन. सो
इस परिवार ने जिन्हें कोई कुर्बानी नहीं दी, खालसा जी उन्होंने फैसला किया कि असीं हिंदुस्तान की धरती ते राज करना, ते अखीर तक अज तक उन्होंने ये नहीं दसिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि जदों साडा राज होगा उहदा प्रधानमंत्री सिख होगा, मुसलमान होगा, हिंदू होगा, कौन होगा। समा आया उन्होंने गज वज के कहा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हिंदू होएगा, तो उन्होंने राज पाक स्थापित करके दस दिता। असी जिन्हों ने काले पानी दी सजावां कट्टियां, हिंदुस्तान की आज़ादी दे विच सब तो वध उम्र कैदा कट्टियां, सब तो वध सिख फांसियां ते चढ़े, अज असी राज पाग तो हीने आ। मेरा वीर छोटा वीर हुणे दस के गया अज भाई जसपाल सिंह की गल, हुणे मैनूं उहदे मामा जी भाई सुखदेव सिंह जी लैसटर तो मिले ने। परिवार ने हाई कोर्ट दे विच केस किया होया सी, डे लाइट दे विच चिट्टे दिन दे विच गुरदासपुर दे विच शूटिंग होई खालसा जी, नौजवानों ते शूटिंग होई, वाहिगुरू का नाम जपदियां ते नौजवान नूं शहीद किया गया। लेकिन 106 दोषियों दे विचों जिहड़ी भारत की हाई कोर्ट आ, चंडीगढ़ की हाई कोर्ट आ, गुरु प्यारिओ किसी एक नूं भी कन्विक्ट नहीं किया। सारे वारी एक मिसाल नहीं, टेलीविजन ते आण के BSF बार्डर सिक्योरिटी फोर्स का जनरल कहंदा असीं मुंडे मारे आ, मैं गवाया, मैं चश्मदीद गवाया। सुपरडेंट पुलिस कहंदा मैं गवाया, असीं मुंडे मारे आ, कोई सजा नहीं। भावें 20,000 मार दो सिखां नूं, भावें हिंदुस्तान दे विच इन्हां नूं अग ला के साड़ दित्ता जावे, किसी एक व्यक्ति नूं सजा नहीं। ते अज असीं की करना? जे संघ परिवार ने कुछ तय कीता सी कि असीं हिंदुस्तान की धरती ते राज करना, तो सिखां नूं कौन रोकूगा पंजाब की मुबारक धरती ते राज करनों? खालसा जी सब तो पहली गल जिहड़ी मैं सीखी है, जिन्ने भी गुस्से वीर ने सारे एक दूजे नूं जफ्फियां पा लो। साडा राज किवें मिलना? ਉਹ इदां ही मिलना जिहड़ी गल आपां कहने आ, जेकर सिख सिख नूं ना मारे तां इह कौम इह पंथ कदी ना हारे। उन्हां दा एक परिवार आ, संघ परिवार कहंदे आ, उन्हां दे उस परिवार दे विच 33 करोड़ देवते ने। सानूं शर्म आनी चाहीदी आ। साडा एक गुरु ग्रंथ साहब ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, कोई हत्थों तो जम्मिया, कोई पैरों तो जम्मिया, लेकिन वो एक ने अते उन्होंने राज पाक स्थापित करके दिखा लिया। जेकर असी खालिस्तान चाहते हैं तो खालिस्तान की शुरुआत अज तो, हुण तो, ऐसे मोमेंट तो, ऐसे लम्हे तो, ऐसे पल तो होनी चाहिए। खालसा जी अज तो बाद असी ये तय करिए, असी मनां दे विच फैसला करिए, असी एक दूजे का विरोध नहीं करना। जकारा मैं भी बुलावांगा क्योंकि पंथ की एकता का सवाल आ। बोलो सो निहाल। खालिस्तान कदों तो बनना? अज तो, जदों तो असी ये फैसला कर लिया कि असी एक दूसरे का विरोध नहीं करना, असी एक दूसरे का कभी विरोध नहीं करांगे, असी इकट्ठे होकर चलांगे ते दुनिया की कोई ताकत खालिस्तान नूं, सिखां दे राज भाग नूं रोक नहीं सकती। जे इन्हां दा 90 साल दे बाद हिंदुस्तान ते राज हो सकता तो पंजाब की धरती ते सानू राज करन तो कोई नहीं रोक सकता। सो खालसा जी इहदे नाल नाल कुछ बेनतियां हन कि भाई अमरीक सिंह ने कहा कि ब्रसल दे विच 14 तारीख नूं अगले महीने दे इकट्ठ हो रहा, उत्थों भी सदा आया सिंघां नूं ते उत्थे भी हुम हुमा के विच पहुंचना ते इहदे नाल नाल जिहड़ियां तुहाडीਆਂ ऑर्गेनाइजेशनस जिथे जिथे भी SOPW, सिख फेडरेशन, अमृतसर अकाली दल, बाकी जिन्ने भी दल खालसा सारे मुबारक ने, जिन्ने भी सेवा करते हैं, जिथे जिथे भी खड़े हो इस सेवा दे विच योगदान पाउण दी कृपालता करो। हिंदुस्तान दे विच, भारत दे विच, पंजाब दे विच
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ, ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਰਾ ਫਤਿਹ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਫਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਭਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।